Yes, thank you very much. Today I am going to discuss the division by short method. For that, we know we know the following. Following. Now, first, quotient is equal to dividend upon divisor. And basically this is the division fact. But if this is written as second, dividend is equal to divisor into quotient. This is the multiplication fact. Now, there is a condition of this quotient. There is two conditions. I am just giving here, writing this way. If divisor equal to 1, then ध्यान रखिएगा, if this is divisor is equal to 1, so quotient is equal to dividend, then in that case quotient is equal to dividend. Right? But if quotient is 0, just say, if quotient is equal to 0, quotient is equal to 0, जरा ध्यान से देखिएगा जरा. So dividend is equal to also 0. क्यों? Dividend is equal to divisor into 0 is equal to 0. These are the analytical things. It should be put in the mind of the students. Now, I am going to give you a example through table to test the students whether they know this division fact and the multiplication fact and their differences. Just say. Now I am just saying, I am giving example 1. Example 1. What is the interval? Write dividend divisor quotient and multiplication fact. Fact of the
following division fact. I am making a table for that fact. Here I am writing serial number, then I am writing division fact, and out of division facts, one has to write dividend, then divisor, then quotient, and multiplication fact. I have already discussed that the division facts and the multiplication facts are opposite to each other. So just see here, I am just writing question 1. 8 divided by 2. Why it is called short method? Because it is one digit or maximum 2 digits of the low value. Then second, 10 by 5. This is equal to 4 and this is equal to 2. Third, 27 by 3 is equal to 9. Then 25 fourth, 25 divided by 5 is equal to 5. And then 25 fifth, 25 divided by 25 is equal to 1. That is one thing. Again, I am giving some example 6. 18 divided by 1, and they have to fill up this and find out. Then again 7, that is, suppose I say this divided by 95 is equal to 1. There are 7 questions I am giving whether they understood the meaning of division fact, and also in the division fact they understood the fill up the vacant digit. For example, here digit is vacant, but I have already told you that if you divide any number by 1, what will be the result? Here also I have already told you that if you divide any number by any number, result is 1. So accordingly you have to keep this fine. Now question is that here what is the dividend? That 8 is the dividend, 2 is the divisor, and 4 is the quotient. I am just giving an example. And what is the multiplication fact? If you multiply 2 by 4, means divisor into quotient. देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 2 into 4 is equal to 8. This is the multiplication fact. And this division fact is a short method. I am just putting here a short method. अब इसको आप लाइन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ लाइन दे दीजिए, यहाँ लाइन दे दीजिए, यहाँ लाइन दे दीजिए और यहाँ लाइन दे दीजिए. और फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप यहाँ पर लाइन खींच दीजिए जिससे कि रिजल्ट्स विल नॉट बी मिक्स्ड. बिकॉज़ देयर स्मॉल किड्स. This is what I desire to tell you
that the student should know all these things before moving for the longer method. Now, I will give example 2. Now, I have already explained the shape and patterns, so there is no problem to understand the example 2. Just see example 2. Example 2, you have to write the multiplication, division, again I am writing short method, and multiplication fact. Fact of the following. अब देखिए A, look very carefully so you will understand. I am making this two triangle. Again I am making two triangle. Again I am making two triangle. And again two triangle. और इसमें ध्यान रखिएगा, as I mentioned, this first, second, and third, and fourth. There are 4 boxes. That means the group is 4. And there are 2 triangles in one box. That means number of the object in a group is 2. So, how you can write the multiplication fact? I am just putting here, I am just giving here a column of multiplication fact. And division fact. अब आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में आपको याद रखना पड़ेगा कि हाउ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज रिटेन. द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स in a group 2 into number of group is 4 is equal to the total number of object is 8. That is how you can say the multiplication fact. But when you go for the division fact, so in division facts, total number of object is a dividend. So here it will be 8 divided by, if you divide by 4, generally not, because it is the number of the group, so divide by 2. So it is going to be 4. I am just giving the example and I am giving the problem, other problems. B. There again, I am making 2 triangle in one group. So for that, also you have to write the multiplication fact and division fact.
As far as C is concerned, another example. I will not make a triangle, I will make something else. 0, 0, O, 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 O. One group. It is not a circle. Circle represents number of the objects. Draw the line, draw the hairline, draw the hairline. Make a distinction. And you can make a serial number या cases. कुछ भी यहाँ कर दीजिए. So आपको इसको जो है फिलअप करना पड़ेगा जो है. Now I am giving another example. BC. Suppose you make eggs. I am just putting eggs. There are 6 eggs. X देखिए ऐसे होता है, जो थोड़ा गोला होता है. चलिए 3x मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. फिर यहां पर हमने 3x कर दिया. 1, 2, 3. यहां पर हमने भी 3 कर दिया. अब इसके अलावा यहां पर लिखना पड़ेगा आपको जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. some fact. और यहां पर लिखना पड़ेगा डिवीजन फैक्ट. जैसे हमने यहां एग्जांपल दिया है, यू हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ द ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देन यू कैन राइट इट. नाउ आई एम मूविंग फॉर अनदर थिंग्स, so you can do here. ABC, this is the D. E. E is, this is the vacant, you have to fill up, divided by 5 is equal to 4. So out of this, first you have to fill up this thing, then you find out multiplication fact and division fact. Then F. This divided by 5 is equal to 7. Now, why I have given this thing? Because multiplication fact is nothing but 4 into 8. Just say 2 into 4. So here is a 7. 7 5 ja 35. 5 4 ja 20. Then fill up these things. There are so many ways to do this thing. Then again, F, G. 18 by 3. Fill up this thing. What will be there? Then you can have H. 6 into 3 is equal to 18. So, क्या डिवीजन, यही डिवीजन फैक्ट है या नहीं है, ये आपको देना पड़ेगा. यहां पर दोनों मिक्स मैंने कर दिया है, डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दोनों मिक्स किया है. आई इज इक्वल टू 12 into 3 is equal to, just fill up this thing. So this is a division and multiplication fact. Division and multiplication fact. फैक्ट देखिए यहां डिवीजन फैक्ट दिया हुआ, बट हियर यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द
division fact, which one is not division fact. Accordingly, you have to write this thing. For example, this is a multiplication fact. Repeat the same thing. And out of that, write the multiplication fact. I will just give an example. Suppose this is a multiplication fact. So, this is a multiplication fact. So, write 6, repeat it. 6 into 3 is equal to 18. But here, division fact is equal to 18 divided by 3 कहिए चाहे 6 कहिए. So, that is now the next item which I am going to do is the division on the number line. So, how we will do the division on the number line? अब देखिए, I will just do example 3. Well, 3. Divide 20 by 5 on number line. यहाँ पर इधर क्या, this is the dividend, this is the divisor. Again I am writing for help. This is the dividend, and this is the divisor. But when you write 20 upon 5, this is the short method. 20 upon 5 is a short method. अब देखिए सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन अब देखिए, नंबर लाइन है तो दैट नंबर लाइन शुड बी ड्रॉन इक्वल टू द division number, means 20. From 0 to 20 you have to draw the line. So, step 1, draw number line from 0 to 20 और 20 के बगल में लिख दे रहा हूं डिविडेंड के बराबर होना चाहिए, जो है डिविडेंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, जस्ट लेफ्ट सम स्पेस फ्रॉम हियर एंड हियर डू हियर नंबर लाइन. और लवन कहां से 0 से 20 ड्रा करना है. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अर्लियर इन द क्लास 1. सो यहां पर एक लंबा लाइन खींच दीजिए आप अपना यहां से यहां तक अप्रॉक्सीमेटली, और यहां पर 0 करिए. यू हैव टू डू एज आई एम डूइंग हियर, अदरवाइज देयर विल बी मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक. मेक इट हियर 20. If you have this line, so approximately you can put 10 here. Then between 0 and 10, you can approximately 5 here. Then 15 here. This 0, 5, 10, 15, 20 should be a bigger line, right? Then you can divide this in the 5 region. 5 region means 1, 2, 3, 4, right? 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 2, 3, 4. 4 में ही डिवाइड करिएगा. 6, 7, 8, 9. अगेन 4 में डिवाइड करिए. 1, 2, 3, 4. 11, 12, 13, 14, 15. Again 1, 2, 3,
4. It should be approximate. Either use the scale, number scale, it is good, but if not, I will suggest don't use the scale, but have the practice of drawing number line. और यहाँ देखिए 16, 17, 18, 19. अब देखिए, in a number line, when I have discussed about the product, so we started from the left. But generally in the division, we should start from the right, because multiplication and the divisions are opposite to each other. So क्या करना हमको? We have to divide this whole line by 5. So क्या करना पड़ेगा आपको जो है? अब आपको जो है backward counting करना पड़ेगा. तो for backward counting, what we should do? You should start from here. So first 1, 2, 3, 4, 5. That means you make a semicircle in a backward direction by showing this and 5 as this. And this is the one semicircle. So here put 1. अब देखिए, again 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Again make semicircle. Similarly, make this. Similarly, make this. This is again 5, again 5, again 5. But this is the first, second, third, and fourth. So that means, if you just want to see the, but how we have done it, stepwise I am writing. Step 1 is this. Now, number line from 0 to step 2. Step 2 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ. Draw semicircle with backward, with reverse arrow below number line at a gap of 5 starting from 20. हमने कर दिया कि फर्स्ट सेमी सर्किल इन रिवर्स डायरेक्शन, आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज, अगेन 2, 3, 4. दैट मीन्स 4 इज द quotient. That means step 3 will be 20 divided by 5 is equal to 4. ये ध्यान रख लीजिएगा. मैं अब यहीं पर आपको जो दिस इज द डिवीजन फैक्ट, दिस इज द डिवीजन फैक्ट. अब देखिए, ये रिवर्स में होना चाहिए, ध्यान रखिए. जनरली किताब में ऊपर से ही दे देते हैं, लेकिन नो, बिकॉज द डिवीजन इज अपोजिट टू मल्टीप्लिकेशन. अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे लिखेंगे, इसी चीज का जो है, वंस यू नो दिस, देन वेरी इजीली यू कैन राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अब इसको मैं यहां पर थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो जाएगा, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा. ये डिवीजन फैक्ट है और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मैं लिख रहा हूं. अब देखिए, ये हो जाएगा. अब आपका जो है सॉल्यूशन, हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. आंसर आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा? 5 into 4 is equal to 20. Multiplication fact. अब इसको नंबर लाइन पर, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, बट हियर आई एम गिविंग व्हाई इट इज रिवर्स टू ईच अदर. तो यहां पर भी वही है. स्टेप 1, ड्रॉ नंबर लाइन
line from 0 to 20, which is equal to dividend. We know. But how you draw it? Just say number line. Similar way to draw the number line. There is no other method to draw the number line from 0 to 20. 0, 20. That is where one should write it. This is 10. No problem. This is 5. No problem. This is 15. No problem. Again mark 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. लड़के पूछ सकते हैं सर 4 ही क्यों, ये तो 5 है. तो इस लाइन को 0, 5 को 4 में डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. यहाँ पर 16, 17, 18, 19. अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ध्यान रखिएगा. सो फॉर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वी शुड ड्रॉ एबव द लाइन एंड वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स 0. अब देखिए क्या है 5 into 4. या ध्यान देखिएगा 5 into 4. तो आपको क्या करना है, आपको यहां से शुरू करना है, ये क्लॉकवाइज ऐसे करना है. फर्स्ट 5, सेकेंड 5, थर्ड 5 एंड फोर्थ 5. यहां पर लिखिए 5, 5, 5, 5. और यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब देखिए 4 हो गया. आपने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो 20 आ गया. उसे 20 दिया नहीं रहता है, लेकिन 20 हमने सेफ साइड के लिए हमने दे दिया. ये आपको यही निकालना है. 5 into 4 को तो आप या तो नंबर खींच लीजिए कन्वीनियंस हिसाब से. एक बार 5 करिए, 2 बार 5 करिए, 3, 4 और 20 आ जाएगा. अभी स्टेप 2 क्या है, ये जस्ट उसके उल्टा होगा. ड्रा सेमी सर्किल, सेमी सर्किल with forward arrow, with forward arrow above the number line, number line at the gap of 5, at the gap of 5 till 4th time, because 20 is not known. तो जहां 4th टाइम करेंगे, सो सेमी सर्किल ends at 20, and that is the result. Step 3 is equal to 5 into 4 is equal to 20. लेकिन अगर 4 into 5 होगा तो ध्यान रखिएगा एट द गैप ऑफ 4 आपको करना पड़ेगा 5 टाइम्स, तब जाकर के 40 होगा जो है. नाउ आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल्स for the division fact, only division fact. So you have to do this thing. This is a question for practice. Question for practice. This is a question for practice. So question 1. I will not give much. Question 1. Draw division fact,
on number line, on the number line, on the number line, and write dividend, then divisor, quotient, and multiplication fact. और यहाँ ध्यान रखिएगा, only division you have to done on the number line, not multiplication fact. You have to write all these things. I am just giving A 12, 3, and you have to fill up by getting number line. Once you know this thing, then you can write dividend, divisor, quotient, and the multiplication fact. B 18 by 3. C 4 into 3. This is a multiplication fact. So इसको डिवीजन फैक्ट में करना पड़ेगा पहले जो है D A B C D. D is equal to 6 into 3 is equal to. अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया है तो अब ये देखिए, अब आपको इसमें जो डिवीजन फैक्ट 2 हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कैसे नंबर लाइन पर किया जाएगा वो भी आपको बताना है, और डिवीजन फैक्ट को कैसे करना वो भी बताना है. ये मैंने हिंट दे दिया, हिंट फर्स्ट डिसाइड क्वेश्चन is based on division fact oblique multiplication fact. अब एग्जाम्पल के तौर पर 4 3 या 12 लिख दीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होगा. तो इसका डिवीजन फैक्ट कैसे करेंगे आप जो है नंबर लाइन पर, वो आपको बताना पड़ेगा जो है. नाउ आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट, दिस इज शॉर्ट मेथड, ऑल आर द शॉर्ट मेथड. ऑल डिवीजन फैक्ट यहां पर लिख दीजिएगा, ऑल डिवीजन and multiplication fact is short method. Short method means the 2 digit and 1 digit and 2 digit is less than 50. ये आप क्लासिफाई कर लीजिए. शॉर्ट मेथड का मतलब कि 2 डिवीजन जो भी मैंने कंसीडर किया है लेस देन 50 किया है. बट व्हेन यू कंसीडर द डिवीजन फैक्ट लॉन्ग मेथड, देन 2 डिजिट नंबर विल बी बिटवीन 50 and 99. थैंक यू वेरी मच.